So, so no, look, I'm a little too late in the bandwagon of it, but I still have a lot to say about it, so I will say it. If you remember Kabir Singh, it garnered a lot of polarizing views. बहुत लोग थे जिनको बहुत relatable लगा था, तभी तो वो movie इतनी successful थी. Plus Shahid Kapoor was amazing in it. Secondly, people hated it because of the so misogyny, not abduction, sorry, the misogyny, abuse, and glorification of that, and no consequences for the person. Was couple of things that really people really hated कि ये behavior को इस तरह से normalize क्यों किया जा रहा है. And I agree with the subject matter of it. Yes, abuse को glorify किया जा रहा था. Not something up my alley. But my confusion started with the view and the way people hated so ardently on the movie, because my question is, isn't that what is shown in all other Bollywood movies? So suddenly एक मूवी में इतना गुस्सा क्यों निकल रहा है, राइट? इतना प्यार और इतना गुस्सा निकल क्यों रहा है सडनली? क्योंकि सेम चीज़ तो हर जगह हो रहा है. वन पर्सन के साथ मैंने आज की क्या था, देवर लाइक ग्लोरीफाई कर दिया गया, उसको कॉन्सिक्वेंसेज मिलने चाहिए. बट अगेन, इजंट दैट द सेम थिंग दैट हैपेंस इन ऑल ऑफ द मूवीज? नो, द गाय विल डू समथिंग रियली शिटी, एंड समटाइम्स इवन गर्ल्स. देयर आर मूवीज आउट देयर जहाँ पे women are reverse misogyny, misandry, sorry, I forgot the word. Women are doing misandry, and that's also glorified, and these people have zero consequences, right? So my question is कि एक चीज से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है? बिकॉज मे बी दिस वॉज डन ऑन अ बिगर लेवल. लाइक जनरली ये सब मूवीज बहुत ही छोटी छोटी होती है, विच इज अगेन अ फॉल्स थिंग. द बिग हीरोज ऑल्सो डू दिस काइंड ऑफ stalker behavior, and it's glorified, and all the big names do it. Salman Khan, Shah Rukh Khan, I don't remember, Amir Khan also did. पहले बहुत करते थे. Anyhow, my question is कि this is so normalized, and not just in movies, in our life as well. हम जानते हैं अपने ही सर्कल में, I have friends who are dating each other. They have extremely toxic relationship. This kind of, if not visible physical abuse, there is a lot of verbal abuse, a lot of emotional abuse, and it's visible. But nobody does anything. In fact, हम बहुत इजीली अरेंज मैरिजेस पे डाल देते हैं. ट्रू है, अरेंज मैरिज में बहुत बोला जाता है एडजस्ट करो एंड एवरीथिंग. बट apart from थोड़ा सा ऊपर का pseudo liberalism, in our hearts we are not liberal. We are so brainwashed by these weird things that and the reason we are brainwashed for it is because we don't ask question. We don't ask और थिंक कि ये यहाँ पे क्यों रेलिवेंट है या नहीं. ये प्रैक्टिस अगर हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किसके बेनिफिट में कर रहे हैं, ताकि हम डिसाइड कर सके कि राइट, इज दिस फॉर आवर बेनिफिट और नॉट. माई पॉइंट बीइंग कि ऑल दीज काइंड्स ऑफ मिसोजिनी, सेक्सिज्म इज नॉट जस्ट हैपनिंग इन अरेंज मैरिजेस. इट इज हैपनिंग इन लव मैरिजेस. इट इज हैपनिंग इन हाउस होल्ड. Even in spaces where you feel like it's liberal, there is just so much of internalized sexism and misogyny, even in us women, that we do it to each other as well. So then the question remains कि फिर हम एक चीज़ को पकड़ के इस तरह से अपना गुस्सा क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि अपने अंदर झांक के देखें कि ब्रो ये हम भी करते हैं. एंड जब वो बड़े पर्दे पे दिखाया गया हमें, तो आई फील लाइक कि वी गॉट एक्सट्रीमली अनकम्फर्टेबल कि नहीं वो ऐसे कैसे कर सकता है, जबकि इन रियलिटी दिस हैपन्स टू यू समटाइम्स or to people around you. Have you ever raised a question to that? Say तुम्हारी किसी चाची मामी के साथ ऐसा कुछ तुम्हारे सामने हुआ where चाचा मामा has been extremely disrespectful in a common space. Have you or anybody that you know has ever raised a voice to it? You're like उनका problem है वो समझे. तो क्या, why can we not look at this movie in the same way? What is this hypocrisy? My point being कि we cannot victimize one person or story or movie or literature because it's a reflection of us. Understand that it's a reflection of us, and if it's making you uncomfortable, it means there's something in you that you need to really understand. It's triggering something in you. You need to understand what it is, and when you understand it, you need to change it, because that any art is always a reflection of the society. हिस्ट्री में है यार, अगर तुम्हें प्रेजेंट में नहीं समझ में आ रहा, हिस्ट्री में जाओ, देखो कि जब जिस भी टाइम फ्रेम में, जिस भी सिविलाइजेशन, जिस भी कंट्री में जाओगे, उसका जो आर्ट होता है, इट्स ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी इटसेल्फ. आर्ट के कॉन्टेक्स्ट में तुम विजुअल आर्ट ले सकते हो, रिटन आर्ट्स, whatever it is that you want to see. So if your art is telling you and it's making you visibly uncomfortable, don't shit on that and move
move on in your life, that's the worst thing you're doing. Don't move on in your life and be like कि टट्टी है, अगर वो टट्टी है तो recognize कि तुम्हारे अंदर की टट्टी कहाँ है और उसको साफ करो.